Our today's topic is lesson air. Air. Atmosphere provides us air to breathe. Now, what is atmosphere? It is a cover of air that surrounds the earth. Atmosphere is a cover of air that surrounds the earth. Atmosphere provides us air to breathe. Now, what is atmosphere? It is a cover of air that surrounds the earth. This is atmosphere, cover of air that surrounds the earth. It provides us air to breathe and it protects us from the harmful rays of the sun. Now listen again, it is a cover of air that surrounds the earth. It provides us air to breathe. It protects us from the harmful rays of the sun. And without this, agar atmosphere na ho, we would be baked during the day due to the heat of the sun. Without atmosphere, we people would be baked during the day due to the heat of the sun and get frozen at night due to the cold weather at night. During the day, we would be baked, and during night, we would get frozen if there is no atmosphere. So, atmosphere protects us from the harmful rays of the sun, and atmosphere made the temperature suitable for life. It made the temperature suitable for life, for living beings. Atmosphere made the temperature suitable for living beings. Now, is it clear what is atmosphere? Next is composition of atmosphere. 78% of nitrogen. It comprises 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% other gases like hydrogen, helium, etc. 21% oxygen, 78% nitrogen, and 1% other gases. 1% other gases. Apart from gases, tiny dust particles are also present in the air. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. And first is, I'm going to tell you about all the gases. Number one is nitrogen. Nitrogen, amount of nitrogen is more in the atmosphere because it is 78%. So amount of nitrogen is more in the atmosphere as it comprises 78%. And plants need nitrogen for their growth. It is essential for the growth of plants. Nitrogen is essential for the growth of plants. Plants cannot take nitrogen directly from the air. Plants cannot take this gas directly from the air. It is the small bacteria inside the soil and the roots of the plants. The roots of the plants, they collect nitrogen from the air and change it. It's from that plants take nitrogen. Plants can use it. First is nitrogen. It is 78%.
amount of nitrogen is more in the atmosphere, and it is essential for the growth of plants. Which gas is essential for the growth of plants? Nitrogen. But plants cannot take nitrogen directly from the air. It is small bacteria in the soil or the roots of the plants that take nitrogen from the air and change it. And from that, plant use nitrogen. Plant use nitrogen. Next gas I have written oxygen. It is 21%. It is the second most plentiful gas in the air. Which is the second most plentiful gas in the air? That is oxygen. It is 21%. All human beings, plants, and all human beings and animals need oxygen for survival. Living beings need oxygen. Human beings and animals need oxygen for survival. Green plants produce oxygen and its content remains same. Oxygen कौन produce करते हैं? Green plants. And the content of oxygen remains same. क्यों इसका content same रहता है? Because it is released by green plants. Oxygen is released by green plants and its content is remain same, but sometimes it disturbed when human beings cut the trees. When there is deforestation, then it gets disturbed. For example, at present, oxygen, because plants, green plants provide us oxygen. Plants तो हमें free में oxygen provide करते हैं. But during Corona period, अभी आपने सुना ही होगा, आप before few months आपने news सुनी होगी, लोगों ने ऑक्सीजन बाय की, खरीदी. ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कम पड़ गए थे हॉस्पिटल्स में, लोगों को ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी. तो ऐसा क्यों? क्योंकि कंटेंट, इसका अमाउंट कम हो गया ऑक्सीजन का. एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो गया, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर दिया, तो डिफॉरेस्टेशन हुई. कहीं ना कहीं लोग रिस्पॉन्सिबल रहे हैं इस बात के लिए. तो जो चीज हमें प्लांट्स फ्री में देते हैं, वही चीज ह्यूमन बीइंग्स ने खरीदी, और कितने लोगों की लाइफ भी चली गई जिनको ये ऑन द स्पॉट प्रोवाइड नहीं हुई. कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो कितने लोगों की लाइफ भी चली गई. तो आप सोचो ये कितनी एसेंशियल गैस है फॉर सर्वाइवल. ठीक है, वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ताकि इसका कंटेंट जो है वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो. नेक्स्ट इज carbon dioxide. Plant use carbon dioxide to make their food and release oxygen. I've told you that green plants produce, green plants जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन. तो plants need carbon dioxide, use carbon dioxide to make their food. And they release which gas? Oxygen. Humans and animals both release carbon dioxide and consume oxygen. Human beings and animals both release and consume, release carbon dioxide, good, and consume. Whereas यही चीज हम plants में क्या बोलेंगे? Plants need या plants release oxygen and consume carbon dioxide. तो ये उल्टा है. Learn it. Oxygen
आप बोलोगे ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स, human beings and plants release, learn it, release carbon dioxide, but they consume oxygen, whereas plants, they release, plants release oxygen and consume carbon dioxide. So their balance, so the balance, there is balance, but if this balance is upset, क्योंकि ये बैलेंस रहता है रिलीज्ड बाय, अगर ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम करते हैं तो प्लांट्स उसे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। उल्टा अगर ह्यूमन बीइंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज, एंड उसे कंज्यूम कौन कर लेता है, प्लांट्स। सो देयर इज बैलेंस, बट दिस बैलेंस कैन बी अपसेट। कैसे? बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल, दिस बैलेंस कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय बर्निंग ऑफ coal and oil, fuels like coal and oil, and this add billion tons of carbon dioxide in the atmosphere. अब एटमोस्फियर में किसका कंटेंट बढ़ गया? वैसे तो कंटेंट सेम रहे, बैलेंस सेम रहे, अगर वो इक्वल चलता रहे कि ह्यूमन बीइंग्स रिलीज कर रहे हैं, प्लांट्स कंज्यूम, ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम कर रहे हैं जो गैस, प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं, तो देयर इज बैलेंस, बट दिस बैलेंस कैन बी अपसेट। कैसे अपसेट हो जाता है? बाय बर्निंग फ्यूल्स, केयरलेसनेस ऑफ, अगेन केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बाय बर्निंग फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल, and due to this content या amount of carbon dioxide in the atmosphere increase, billion tons में वो increase हो जाता है, and it leads to global warming। फिर क्या होती है? global warming। due to this there is global warming, and due to global warming ice melts, ice of glaciers melts, and this leads to floods। फिर क्या आते हैं? floods। and who is responsible for all these destruction? human beings, because human beings ने ऐसी कौन सी गलती की? they add, क्या ऐड कर दिया उन्होंने? amount of carbon dioxide in the atmosphere by burning fuels. Which fuels? Coal and oil। so it is only because of the carelessness of human beings, and this led to global warming। क्या होती है फिर? global warming, and due to global warming ice of the glaciers start melting, and this leads to floods। फिर क्या आते हैं? floods। so this is the reason, impacts of global warming। now next is air circulation। एयर सर्कुलेशन। एक मिनट, आप इतना बताओ, अब फ्राई पैन में आपने मम्मा को चाय बनाते देखा होगा, ठीक है? तो जब वो वाटर बॉयल होता है, ठीक है, वो वेपर्स किधर जाते हैं? लाइट हो जाते हैं ना, तो वो किधर जाते हैं? अपवर्ड्स ना। अब एक मिनट, हम छत पे अपने आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स, छत पे आपके मम्मा जैसे खिलार के आए, वो पानी किधर चला गया? क्लोथ में से एयर में चला गया, है ना? तो हॉट एयर जो होती है, दैट इज लाइट। लाइट होने के कारण वो किधर जाती है? अपवर्ड्स। हॉट एयर इज लाइट एंड मूव अपवर्ड्स। लाइट होने के कारण वो हॉट एयर जो होती है वो अप चली जाती है, गोज अप। कोल्ड एयर इज हैवी एंड सिंक्स डाउन। एक साइड आप चाय बनता हुआ फ्राई देखो, उसमें से कैसे वो हॉट एयर, जैसे ही वो पानी गर्म होता है कैसे वो वेपर्स अप जाते हैं। एक साइड आप ठंडा पानी रख दो, उसको तो कुछ भी नहीं होना, वो तो वैसे का वैसे ही पड़ा। हॉट एयर rises up because it's light, whereas cold air it sinks down। अब hot air when goes up, तो वो स्पेस जो है
that is covered by, immediately covered by cold air. hot air up चली गई तो जो space बनी बीच में, that is immediately covered by cold air because cold air is heavy and it sinks down. वो up जा रही है hot air, cold air down जा रही है. तो जो space बीच में खाली हुई उस जगह पे कौन सी एयर आके फिर भर गई? कोल्ड एयर. तो वो गैप कवर हो गया विथ कोल्ड एयर. सो दिस इज कॉल्ड एयर सर्कुलेशन. लिसन अगेन. हॉट एयर इज लाइट, lighter and goes up. Cold air is heavy, so it sinks down. When hot air rises, cold air rushes and to fill the gap. So this is called air circulation. Is it clear? Hot air light होती है and goes up. Cold air heavy होती है, sinks down. अब hot air जब up जाती है तो gap is filled by कोल्ड एयर. गैप इमीडिएटली कौन सी एयर फिल कर लेती है? कोल्ड एयर. और इसी को हम क्या कहते हैं? एयर सर्कुलेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? एयर सर्कुलेशन. अगर पेपर में क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय एयर सर्कुलेशन, तो कैन यू राइट के हॉट एयर एज इट्स लाइट इट गोज अपवर्ड एंड कोल्ड एयर इज हैवी इट सिंक्स डाउन. व्हेन हॉट एयर राइजेस अप, गैप इज कवर्ड बाय कोल्ड एयर. And this is called air circulation. This is called air circulation. Now come to the next topic, that is structure of atmosphere. Atmosphere is divided into 5 layers. Which are the 5 layers? Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. Listen again. Atmosphere is divided into 5 spheres. Which are the 5 spheres? Troposphere. Atmosphere is divided into 5 spheres. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. Exosphere. Is it clear? We live in troposphere. We live in all weather phenomena occurred here. All weather phenomena, weather changes occurred here. हमारे यहीं पे weather changes होते हैं. रेनफॉल आ गई, ठीक है, कभी सनलाइट सनी डे आ गया. जितने weather phenomena they took place in troposphere. It is the most important layer and its height is 13 kilometer. Most important layer, height is 13 kilometer. Learn it. Height is 13. Air we breathe exists here. जो हम air breathe करते हैं that exists in troposphere. And all weather changes occurred here. It is the first layer. Height is about most important layer. Height is 13 kilometer. And the air we breathe exist here. All weather phenomena, all weather changes occurred in this layer. कौन सी layer में weather changes होते हैं? Troposphere. Now is it clear? Troposphere के बारे में अगर आपको 1 mark में लिखना है तो can you write? Most important layer. Height कितनी है? 13 kilometer. And air we breathe exists in troposphere. And all weather changes took place in troposphere. Next is stratosphere. Above troposphere, there is stratosphere and it extends up to 50 kilometer. कितना? 50 kilometer. Above troposphere, there is stratosphere and it extends up to 50 kilometer and it is free from clouds. No weather changes occurred in this layer. यहाँ पे कोई weather changes नहीं होते. It is free from clouds. यहाँ पे clouds नहीं बनते. And it is good for flying aeroplanes. It is good for flying. Aeroplanes fly in troposphere के stratosphere. One more question. Aeroplane flies in stratosphere. Why in stratosphere? Because
free of clouds, because this layer is free of clouds. No weather changes occurred in this layer. कहाँ पे weather changes होते हैं? Troposphere. And gas we need to breathe, that is also available in troposphere. Whereas in stratosphere हम कहेंगे no weather changes occurred. It is free from clouds, so good for flying aeroplanes, and it extends up to above troposphere. Above troposphere there is learn. Next is mesosphere. Third layer is mesosphere. तो इसमें आप बताओगे it has, आप इसी में अभी पहले बताओगे इसमें ओजोन गैस भी है. देखो आई हैव रिटन हियर. स्ट्रेटोस्फीयर में आप बताओगे it has ozone gas that protects us from the harmful rays of the sun. Troposphere, first layer 13 kilometer, and all weather changes occurred in troposphere, provides us air to breathe. Stratosphere, no weather changes occurred, extends up to 50 kilometers, and free of clouds, good for flying aeroplanes. Ozone layer is also present in stratosphere. Learn it. Stratosphere में देखो मैंने ozone भी लिखा हुआ है, aeroplane भी है. Is it clear? Extends up to 50 kilometers. Next is, अब third आपकी आ गई mesosphere. It is the third layer, extends up to 80 kilometers. 80 kilometers. Third layer extends up to 80 kilometers. Meteorites burn in this layer when they enter from space. Meteorites burn in this layer when they enter from space. Meteorites enter in this, burn in this layer, start burning in this layer when they enter from the space. Listen again, it is the third layer, extends up to 80 kilometers, and meteorites start burning in this layer when they enter from space. When they enter from space. Fourth layer is thermosphere, also known as ionosphere. Thermosphere is also known as ionosphere. इसको और क्या कहते हैं? Ionosphere, thermosphere or ionosphere. Fourth layer is thermosphere. It is also known as ionosphere, and it extends between 80 to 400 kilometers. 80 से लेके 400. It extends up to 80 to 400 kilometers. Next, इसमें आप ये भी बता सकते हो, it helps in radio transmission. It helps in radio transmission. Satellites are found in this layer. Thermosphere में और क्या पाई जाती हैं? Satellites. Helps in radio transmission. It helps in radio, and satellites are found in thermosphere. Aeroplanes can fly in stratosphere. Meteorites burn in. We live in troposphere. Is all weather changes occurred in this layer. Clouds are not formed. तो इस वजह से सारे क्वेश्चंस बन जाने आपके. Is it clear? Next is exosphere. It has thin layer. Light gases like helium, hydrogen that float into space. Exosphere, topmost layer. It is the topmost layer, and it has thin air. यहाँ पे air कैसी है? Thin. And light gases. कौन सी gases हैं? Such as helium, hydrogen that float in this exosphere. आप ऐसे भी कह सकते हो. ठीक है? Listen again. Thin, यहाँ पे thin layer है, और यहाँ पे और क्या बताओगे आप? Topmost layer है, and exosphere, topmost layer, thin layer, and here light gases are formed such as helium and
hydrogen that float in space. So this is about the structure of atmosphere. We live in troposphere. Ozone layer is found in which layer? Ozone layer is found in stratosphere. Aeroplanes fly in. Weather phenomena occurred in. No clouds are formed in. Meteorites burn in this layer. This layer extends up to 400 kilometers. Thermosphere. And satellites are found in. Helps in radio transmission. Here thin gases are found, thin layer of gas. And light gases, helium, hydrogen, float in the space. Name the layer. Very good, exosphere. So this is about the structure of atmosphere. Now is it clear today? बस अभी आज इतना ही करते हैं, बाकी हम कल नेक्स्ट पीरियड में करेंगे. First is air. Air कौन प्रोवाइड करता है? Atmosphere. Now what is atmosphere? Cover of air that surrounds Earth. And next, it provides us air to breathe, protects us from the harmful rays of the sun. अगर एटमॉस्फेयर ना होता, we would be baked in the day due to the heat of the sun and get frozen in the night due to cold weather. So this is, so atmosphere made the आप कह सकते हो air comfortable. Atmosphere made the climate comfortable for the human beings to live. Next is composition. Nitrogen सबसे ज्यादा है 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेस 1%. अब नाइट्रोजन किसको चाहिए? प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ. क्या वो डायरेक्ट नाइट्रोजन ले सकते हैं प्लांट उससे, एयर से? नो. इट पहले कौन इसको कलेक्ट करता है? बैक्टीरियाज इन द सॉइल, एंड देन दे चेंज इट, and from that plant use nitrogen. Plant needs nitrogen for their growth. Oxygen. Human beings, animals need oxygen for survival. Plants, green plants release oxygen. So the content of oxygen remain same, but it can be disturbed. हो सकता है ना disturb? कब? It can be disturbed. कब डिस्टर्ब हो सकता है? When there is deforestation. जब लोग ट्रीज को काटेंगे तो ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता चला जाएगा. नेक्स्ट इज अदर गैसेस. अदर गैसेस हैं ओनली 1%. एंड नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो इम्पोर्टेंट गैस. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एटमॉस्फेयर में कम हो जाए या बढ़ जाए तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि अगर इसका कंटेंट बढ़ जाए तो लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या मेल्ट हो जाएंगे? अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लड्स आ जाएंगे. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट radiated from the earth. It is called greenhouse gas, and without it earth would have been too cold to live in. When it's, अगर इसका लेवल डाउन चला जाए इन एटमॉस्फेयर, मैंने कहा ना तो इसका इंक्रीज होना चाहिए ना ही डाउन. इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग, डाउन जाएगा तो व्हाट हैपन? अगर इसका कंटेंट डाउन चला गया तो वी कांट लिव ऑन दिस अर्थ. अर्थ पे रहना पॉसिबल नहीं रहेगा. ठीक है? विदाउट दिस अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव. वेरी डिफिकल्ट टू लिव ऑन अर्थ बिकॉज बहुत ठंड हो जाएगी. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट डाउन जाएगा दैट इज डेंजरस. अपवर्ड जाएगा दैट इज आल्सो नॉट गुड.